Hello and good evening, all of you. Welcome to Alpha Yes Academy. And today, in this detailed topic analysis session, we will be seeing a topic, or the name of the topic we have decided is 7 decades on. India is still debating over a national language. अब अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा कि कितना ज़्यादा लैंग्वेज हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज को लेके बवाल हुआ पार्लियामेंट में, रोडों पे, पूरे देश में. तो आइए समझते हैं कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या इस समस्या का कोई हल है या नहीं, या लोगों ने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और आज की स्थिति क्या है और क्या होना चाहिए. तो लेट्स बिगिन. नाउ द डिबेट ओवर नेशनल लैंग्वेज हैज़ बीन अ कंटिन्यूइंग वन. ऐसा नहीं है कि ये आज ही पैदा हुआ है, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हुआ है. बट लैंग्वेज इतनी सिग्निफिकेंट है क्यों? लैंग्वेज इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज़ नॉट सिंपली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन बट इज़ अ सेंट्रल एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ आइडेंटिटी. उससे हम अपनी आइडेंटिटी जोड़ते हैं, उससे हम अपना हर चीज़, कल्चर, खाना, अपना रहना, अपना इन्वायरमेंट, हर चीज़ हम जोड़ते हैं उस लैंग्वेज से. तो लैंग्वेज कोई छोटी चीज़ नहीं है, इट इज़ अ बिग थिंग. Of all human thoughts are conceptualized through a language, and all human values are pronounced and perceived through it. Up, what were the Constituent Assembly debates about Hindi being made the national language? Now, in 1958, when Linguistic Provincials Commission, I am talking about 1948, okay, Linguistic Commission एक बना, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और उसी के बेस पे कांग्रेस ने, उससे पहले इनफैक्ट कांग्रेस ने जो अपनी रीजनल यूनिट्स थी, जैसे वेरियस यूनिट्स होती है ना, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी रीजनल यूनिट्स होती है, उनको उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर दिया था 1946 तक. बट जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने देखा कि ये तो बाल्कनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स टूट सकते हैं, अपनी आज़ादी मांग सकते हैं. तो इसको देखते हुए द कमीशन फेल्ट टू प्रमोट स्टेबिलिटी ओवर रीजनल एस्पिरेशंस. मतलब उन्होंने बोला कि भैया हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें देश चाहिए, हमें किसी स्टेट को प्लीज़ नहीं करना है, और उन्होंने स्टेबिलिटी चुनी रीजनल एस्पिरेशंस के बदले. नाउ द ऑफिशियल लैंग्वेज इशू वॉज हॉटली डिबेटेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू इट वर फॉर्मुलेटेड ओनली आफ्टर अ कंप्रोमाइज दैट इंग्लिश shall continue to be used for 15 years. In fact, what is the importance of language? Now, every aspect of our life is governed by language. That is employment, job satisfaction, access to treasury or human education, satisfaction with education, preference for contact, or in fact preference for marriage. You'll rarely see a North Indian guy marrying to a South Indian guy, or South Indian guy marrying to a North Indian girl. Now there is a problem of culture, and there is a I would say that there is a cultural disconnect between the both, which now has reduced by a large amount. And now I think Bollywood and Bollywood and the migration has done its work, and people are now being seen as a more of a homogeneous unit than the heterogeneous unit as was seen earlier. Now preference for cultural adoption, cultural understanding, health, एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें जो है आपकी लैंग्वेज से गवर्न होती है. नाउ लेट्स सी व्हाट वेरियस पीपल सेड अबाउट द नेशनल लैंग्वेज और हिंदी. नाउ द ऑनरेबल former Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru, said that English has done a lot of good and helped bring together nationalists across divides. But no nation can, I repeat, that no nation can become great on the basis of foreign language. Allowing English to dominate, he felt, would create an elite class and separate them from a large mass of our people not knowing English. He too favored, in fact, B.R. Ambedkar ji favored Hindi to be the national language. He said that since Indians wish to unite and develop a common culture, he would write, it is bounden duty of all Indians to own up Hindi as their language. Without this, we would be left 100% Maharashtrian, 100% Tamil, or 100% Gujarati, but never truly Indian. K.M. Munshi ji, a former member of Constituent Assembly and a very distinguished, personality, you should read about him. He said that, for instance, argued that only Hindi is capable of becoming the single national language of India because it
bears close similarity to Sanskrit. Ramalingam Chettiar, he also said you cannot use the word national language. He said in parliament, because Hindi is no more national to us than English. We have got our own languages with our national languages. So he was of the thought process that there cannot be a national language, but there has to be national languages which are, today enumerated in, if you see the Schedule 8 of the Constitution of India. As another member argued, preserving English would only please the ghost of Lord Macaulay, and as Mahatma Gandhi himself stated in 1946, only the language which the people of a country will themselves adopt can become national. This language was Hindi. Now, why was there so much of debate in the Constituent Assembly about Hindi? Now, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें लगा कि यार एक होप हुई कि हम कुछ को बड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो हमारे सोशल स्टिग्मास थे, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी थी, हमारे जो प्रिविलेजेस थे वो इतने ज़्यादा थे कि जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने देखा कि द आइज़ वॉज वेरी थिन, और अभी इसके नया नेशन बन रहा है, वो स्केटिंग करने के कोई मूड में नहीं था, तो उन्होंने स्टेबिलिटी चुनी. In fact, language in this country stood for and represented culture, tradition, race, history, individuality, and finally a sub-nation. If sub-nations were given political expression, would that not jeopardize the vision of a united India? Was this not a recipe for disintegration? Opposition, especially from the south, was sharp, with the result that Hindi was made India's official but not national language. तो यही opposition from south और यही डर कि क्या पता बल्कनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ना हो जाए, हर स्टेट्स की अपनी डिमांड ना आ जाए. इनफैक्ट अभी भी ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसी के डर के मारे उस टाइम जो है हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं, ठीक है. वी हैव टू ऑलवेज go by the law and the constitution of India. Now, under Article 343 of the Constitution, the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. Now, this is categorically written under Article 343. In fact, the A schedule contains a list of languages in the country. Initially, there were 14 languages in the schedule, but now there are 22 languages. Now, various languages were added by various amendments. There is no description of the sort of languages that are included or will be included in 8 schedules. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ ये लैंग्वेज ही, जैसे लैंग्वेज को क्लासिकल दर्जा देना हो तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि उसको इतना पुराना होना चाहिए, उससे इतनी कल्चर जुड़ा हुआ होना चाहिए, बट 8 शेड्यूल में लैंग्वेज डालने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. देयर आर ओनली 2 रेफरेंसेज. वन इज आर्टिकल 344(1) which provides for the formation of a commission by the president. The purpose of the commission is to make recommendation for the progressive use of Hindi for official purposes of the union and for restricting the use of English. The second reference found in article 351 says it is the union government's duty to promote the spread of Hindi. तो ये आर्टिकल्स आप याद रखिएगा. नाउ वाई देयर वर 1965 में प्रोटेस्ट हुए, वो क्यों थे? नाउ जवाहरलाल नेहरू हैज़ गिवन एन एश्योरेंस इन 1959 दैट इंग्लिश वुड रिमेन इन ऑफिशियल यूज़. 1959 की बात कर रहा हूँ. हाउएवर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जब 1963 का आया तो इन दी एंटिसिपेशन ऑफ एक्सपायरी ऑफ, क्योंकि 15 साल पूरे हो चुके थे भाई, शुरू में तो ये लिखा गया ना कि जो कंप्रोमाइज़ हुआ था कि 15 साल के लिए इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. तो एंटिसिपेशन में 15 साल ख़त्म होने पे 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया, ड्यूरिंग विच द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अलाउड द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज. तो ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 डिड नॉट एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट दिस assurance, causing apprehensions in Tamil Nadu, and violent protests broke out in the state in January 1965 when the official language rule was framed in 1976. It was made clear that the rules will apply to whole of India except Tamil Nadu. तो ये चीज़ बड़ी आप इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बारीकियाँ हैं, इस पर ध्यान रखा करिए, क्योंकि 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया, उसके बाद वहाँ बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुए, और 1976 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज रूल है तो उसमें तमिलनाडु को एग्जेम्प्ट कर दिया गया. नाउ व्हाट इज़ दिस 3 लैंग्वेज फार्मूला? अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, या जो अभी तक एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को नोट किया गया. नाउ 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या कहता है कि बच्चा जो है 3 लैंग्वेज पढ़ेगा, हिंदी, इंग्लिश एंड दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में कोई भी वो एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ेगा, और स्टेट्स हैं जहाँ रीजनली, जैसे आंध्र प्रदेश है तो वहाँ आदमी आपका
वहाँ पे आदमी आपका, तो आंध्र प्रदेश में जैसे वो तेलुगु पढ़ लेगा, तो इस टाइप से रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ेगा। बट ये जो फॉर्मूला था ये आज तक अपनाया नहीं है, और प्रीडोमिनेटली हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ाई जा रही है स्कूल में आज तक। इनफैक्ट ऑल एलीट लैंग्वेजेस फेड्स पीरियड्स ऑफ राइज एंड डिक्लाइन। एक टाइम पे पर्शियन ऐसा लगता था कि वर्ल्ड की सबसे फेमस लैंग्वेज है, फिर उसने अपना डिक्लाइन दिखा। आज इंग्लिश का वही हाल है, जो एक टाइम पे पर्शियन का था, वो एकदम हाइट पे थी। नाउ इंग्लिश का भी एक दिन आएगा, तो वेदर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय हिंदी विल नीड टू बी सीन, ये तो समय ही बताएगा। बट हिंदीज inroads have been strong even without rebel rousing or official acceleration. Bollywood and migration have achieved much more than the state policy, as I've told you earlier. But for the stability of India, with all its diverse languages and entities, Nehru's warning to the Constituent Assembly may well be recalled even today. He said, "There is very much a tone of Hindi-speaking area being the center of things in India, the center of gravity, and the others being just the fringes of India." This was what India had to guard against. He warned, and over 70 years later, it is precisely this tendency that we must again protest. So, that will be all in this particular video. A beautiful 3 mock tests are waiting for you. Just go register and give your 3 mock tests at the alphaes.com for free. Thank you very much. Take care, keep smiling, keep healthy, and we shall see you soon.